It is a slightly longer article. It says freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain education is a heading S. Clause 1 says no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. 1. What does it say? No religious instruction. It talks about religious instruction. In which educational institutions? Another important point is educational institutions. What kind of education institutions? Wholly maintained means completely maintained out of state funds. So no religious instruction can be. What is a religious instruction? Religious instruction आप सरकारी स्कूलों की बात हो रही है. सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप किसी भी धर्म की नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. ये पहला ये करता है. ठीक है. तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है उसको अपन देखेंगे. लेट अस गो टू क्लॉज 2, देन वी विल हैव टू सी इट इन अ मोर कंप्लीट मैनर. क्लॉज 2 क्या कहता है? Nothing in clause 1, because it's talking about clause 1, shall apply to an education institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. So it is giving an exception. पहला तो बोला कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, but they give an exception saying if that institution is established by an endowment and that endowment requires religious instruction to be given. Endowment and that requires. What is the meaning? Simple. Requires religious instruction. So religious instruction को समझ के फिर exception को समझते हैं. Religious instruction means, see, now you don't really get a definition anywhere. It is not, religious instruction word is not defined in any of the acts or even in the constitution. But there was one judgment of the Supreme Court where religious instruction has been kind of defined. We'll talk about that case and briefly in the context it is relevant. This Aruna Roy versus Union of India. Those are दो का order है, दो judgment है. Do you know the difference between order and judgment? Okay, so this is a judgment of Supreme Court. It's a Supreme Court matter. So she and others came to the Supreme Court in 2002 saying that the national curriculum framework, then it was brought in by the then government. उस समय की जो government थी national, वो national curricular framework ला रहे थे. Curricular framework का मतलब होता है कि बच्चों को आप पढ़ाएंगे क्या, टेक्स्ट बुक में क्या लिखेंगे. That is curriculum. पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं तक का. What will be there in the books? So in that curriculum, which was proposed in 2002, there were certain parts which talked about religion. The religious religion के बारे में, religious festivals के बारे में, gods के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनके जो stories हैं, ट्रेडिशन, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए और लिखेंगे ऐसा उसमें आया था. आर्टिकल 28 clause 1. No religious instruction shall be provided in education institutions run by the state. Then and then of course there are arguments, and then what did the Supreme Court say? Supreme Court did not very clearly say that there has to be religious instruction, but there it tried defining what is differentiating between religious instructions and studying religion. धर्म की पढ़ाई करना और धर्म की इंस्ट्रक्शंस अलग अलग चीजें हैं. एंड दे सेड धर्म की पढ़ाई कराई जा सकती है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती. एंड हाउ डिड, एंड दे डिड नॉट डिफाइन इट, बट इन वन ऑफ द जजेस नोट, द जज, वन ऑफ द जजेस इन दैट बेंच ट्राइड डिफाइनिंग दिस. उन्होंने कोशिश की इसको करने की. उसके एग्जैक्ट वर्ड्स maybe useful for us. Of course, I don't have those words exactly, but what did it mean was anything about the religion that is performative in the sense. Performative मतलब worship or anything that is part of worship, place of worship, or place of worship. So that is religious instruction उनका कहना था ये. And this they said
religious instructions which fall in this is the definition they said, is religious instruction. इसका मतलब है कि आप किसी एक धर्म विशेष की या किसी भी धर्म की, नो, इसमें पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कह रहे, नो रिलीजियस मीन्स नन, एक की भी नहीं और 10 की भी नहीं, इसमें इक्वालिटी वाला नहीं आएगा कि एक धर्म का नहीं कर सकते लेकिन 10 धर्म का कर सकते, नहीं कर सकते. रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अलाउड. एंड व्हाट इज इट? इट बेसिकली वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर वर्शिप से रिलेटेड चीजें, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आएगी. लेकिन रिलीजन की स्टडी हो सकती है कि आप कहें कि भाई ये धर्म है, इस धर्म के संस्थापक ये हैं, इस धर्म के मूल्य ये हैं, इसकी टीचिंग्स ये हैं. दिस इज अ स्टडी, दिस इज नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? कि आपने कोई पूजा में कोई आप श्लोक होता है, वो श्लोक आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोलने को कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. दैट कैन नॉट बी डन इन अ educational institution. So they're differentiated between these two. Interestingly, there is another matter going on in the Supreme Court. Right now it's going on. एक केंद्रीय विद्यालय का मैटर है. केंद्रीय विद्यालय में a few years ago they introduced a श्लोक, वो एक श्लोक है, संस्कृत का एक श्लोक है. वो श्लोक जनरली पूजा जब कोई करते हैं तो वो श्लोक से शुरुआत होती है, और वो श्लोक केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को बताया जाता है प्रेयर में. उसके अगेंस्ट भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है एंड इट शुड बी स्टॉप. देयर इज नो डिसीजन ऑन दैट येट. तो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे रिलीजन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है एंड दीज इश्यूज बिकम वेरी वेरी बिग इश्यूज सडनली, राइट? सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, देन religious studies are allowed but religious instructions are not allowed. Then third one is again relevant. See, no person, clause 3, no person attending any education institution recognized by the state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution, to attend any religious worship that may be conducted in such institution or premises attached thereto, if such person minor is guardian. Okay, so what is it? I did not explain this endowment, let's talk about that. एंडाउमेंट का में क्या होता है? एंडाउमेंट में भी एक्सेप्शन क्यों दिया है? क्योंकि फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलीजियस ट्रस्ट, टेम्पल ट्रस्ट है, टेम्पल ट्रस्ट ने एंडाउमेंट दिया. एंडाउमेंट का मतलब होता है एक स्कूल चालू करने के लिए उसकी जमीन, उसका बिल्डिंग बनाने का, उसके टीचर्स का पूरा खर्चा वो उठा रहे हैं, पर उस एंडाउमेंट दैट इज एन एंडाउमेंट पूरा दे दिया, राइट? स्टेट को दे दिया कि आप चलाना, लेकिन हम खर्चा उठा लेंगे, आप चलाओ इसको. और उसमें शर्त रख दी कि ये तो होगा लेकिन आप प्रार्थना के समय में इस श्लोक से चालू करेंगे, उदाहरण. सो इफ इट इज बेस्ड ऑन दैट एंडाउमेंट एंड इफ देयर इज अ कंडीशन इन दैट एंडाउमेंट, देन इट विल नॉट अप्लाई. फिर उस स्कूल में वो किया जा सके. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो फिर तो उसमें अलाउड है ही यदि उस रिलीजन का है. लेकिन क्लॉज 3 क्या कहे? ये किसी भी तरह का कोई स्कूल क्यों ना हो, एडेड हो और सरकारी हो, यदि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, दी जा रही है, तो भी उसमें स्टूडेंट को आप फोर्स कंपेल नहीं कर सकते उसका हिस्सा बनने के, राइट? मीनिंग इफ देयर इज अ स्कूल रन बाय से पर्टिकुलर रिलीजन, even then in that school, if there is a religious instruction being given and if there is a student who doesn't want to be part of it, that student cannot be compelled. और ये कहता है कि यदि वो माइनर है, मतलब 18 साल से छोटा है, तो आप तो उसके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर उसको अटेंड ही नहीं करवा सकते. दिस वाज क्लॉज 3 says. We talked about this. Now there is another PIL now, which is about new school framework. We'll try and cover partly about it, but that's not the national level. This PIL is in Maharashtra, so there is, but there will be similar PIL in other states also. Now I'll have to find out whether there is a PIL in Supreme Court about the National Curriculum Framework, NCF, National Curriculum Framework 2023. What happened was in Maharashtra 2024, this very year, a few months ago, based on the National Curriculum Framework, state curricular framework has been drafted. और वो ड्राफ्ट करके उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है. उसमें दे मेंशन कि क्लास 3 की किताब में क्या रहेगा, एंड इट इज द ऑब्जेक्शन इज नॉट विद होल थिंग, बट इट इज अबाउट समथिंग कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन. सो देयर विल बी वैल्यू एजुकेशन इन दीज क्लासेस, एंड दैट वैल्यू एजुकेशन विल कवर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ठीक है? और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और ट्रेडिशंस में जो वैल्यूज है
उनको भी हम उसमें मेंशन करेंगे, right? This is what is written there. So there are a lot of श्लोक दिए हुए उसमें. There are a lot of hymns given there, right? There are hymns from Manusmriti, there are hymns from some Ved, there are some hymns from some Puranas, some Shastras are there. Now this can be, because there is no worship going on there, so this can be taken as study of religion, right? Which is allowed by that judgment. Study. You can take it as study. And that there's not trying to teach values from there, that there are values. So some good things written there. So they've included those. They've given those particular specific hymns also. Hymns मतलब श्लोक जिसको बोलते हैं हिंदी में वो. Or now what is the petitioner saying? The PIL is saying that it is fine, that this is okay to give. If there are good values in our tradition, in our religion, they can be told to people, right? They can be there. Our children should study. But why only one religion? So the objection is it's a discrimination. The discrimination is being done on the basis of religion, which is violation of Article 14 and 15 both. And of course, this article also. And that cannot be done. It sounds, I have not seen the draft. I think I'll be seeing the draft. Then it's a big, thick document. And there'll be certain parts only of it which will be questioned. Whether it is only about that. Because if it is about Indian traditional systems, and knowledge systems, then you cannot stick to one religion. There are equally old religions in India. Jainism is one of them. Buddhism is another. And there have been traditions such as Charvakas, Ajivikas. There have been such traditions in India where, of course, there also you find good things and value-based things. Those should also then find place. You can't do this. If you ask my opinion, then that is, of course, violation of Article 14 and 15. If those are not there, one has to see. So that is a petition going on. Maybe there will be some interpretation, there will be some decision, and we will come to know whether that can be done. So it could be one thing to say that why do you at all give? No, that's another argument. But if you at all give, keep the things, pick up things from certain books like Manusmriti, or actually Manusmriti ke quotes hai usme diye hue. I have seen some of them, but I have not read the whole document. And from there, then you don't limit it to one religion. You talk about other religions also, because there are good things and good values given in other religions also. That's the contention, that's the argument of the petitioner. To know about various religions is not a bad idea. कि भाई धर्म एक चीज होती है. How do we keep children away from this? We can't. We should not. We should tell them कि भाई ये एक religion है, इसमें ये teachings हैं, इसमें ये practices हैं, ये भी religion है, इसमें ये है. And then we should give our children freedom to choose. That's the real way of doing it, instead of imposing a religion on them.